नमस्कार। हेल्थ पर चर्चा में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा देश काफी तरक्की कर रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आज हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी स्मार्टफोन और टैबलेट्स हैं। बच्चे रियल प्लेग्राउंड की जगह वर्चुअल प्लेग्राउंड को प्रेफरेंस दे रहे हैं। वे वर्चुअल गेम की दुनिया में बुरी तरह उलझे हुए हैं। और बच्चे ही क्यों, बड़े भी पीछे नहीं हैं। हम पड़ोसियों से बात नहीं करते, पर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अजनबियों से घंटों चैट करते हैं। सच कहें तो सोशल मीडिया ने हमें अनसोशल बना दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में युवाओं का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन औसतन 5 से 6 घंटे है। शहर की ये आदत अब बड़ी तेजी से गांवों में पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक तरह का एडिक्शन है जो मानसिक रोग का कारण बन सकता है? शराब और तंबाकू की तरह ही डिजिटल एडिक्शन ऐसी लत है जिसके चंगुल में फंसने के बाद वहां से निकलना मुश्किल होता है। इस नई और तेजी से फैल रही समस्या पर विस्तृत चर्चा के लिए हमने देश के जाने माने विशेषज्ञों को यहां आमंत्रित किया है, जो हमें और आपको ये बताएंगे कि हमें किस हद तक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और इससे बचाव का तरीका क्या है। आज उनको सुनिए और समझिए कि जिन चीजों को हम हल्के में लेते हैं वो दरअसल कितना खतरनाक है। हमारा ये कार्यक्रम YouTube और Facebook पर दुनिया भर में लाइव देखा जा सकता है। तो इससे पहले कि कार्यक्रम को हम प्रश्न और जवाब शुरू करें, हम मिस्टर शंकर के पास चलते हैं, जो हमें बताएंगे कि आज विशेषज्ञ कौन है। Thank you, Kishore. Namaskar and good morning. I am Shankar Raj and welcome to the third episode of Health for Charcha, an initiative of the Asian Coalition for Health Empowerment in association with the Indian Medical Academy for Preventive Health. Recognizing the urgent need to address the harm caused by use of tobacco, particularly smoking, alcohol, drugs, and rapidly emerging smartphone or the mobile addiction, the Indian Medical Academy for Preventive Health has been actively engaged in community outreach through focused prevention and health awareness campaigns and programs. Responding to the increasing number of drug users, smokers, and alcohol consumers year after year, the Asian Coalition for Health Empowerment was established. The Asian Coalition for Health Empowerment seeks to create a movement centered around raising awareness of the harm caused by these addictions. It is firmly rooted in the belief and in respect for the rights of individuals struggling with these addictions, especially the silent menace of smartphone addiction. The third episode is on From Kids to Seniors, Decoding Digital Addiction's Grip and Empowering Change. To speak more on this topic, we have with us Professor Nimesh C. Desai, a senior consultant, psychiatrist, and psychotherapist. With over 40 years of experience, Dr. Desai is also former director of the Institute of Human Behavior and Allied Sciences and is currently Delhi president of Manovikas Charitable Trust. Joining him is Dr. Puneet Jain, a clinical psychologist with nearly 30 years of experience. He is currently practicing in Vinayaka Hospital, Noida, and Fortis Hospital, Oakland. Before I hand over the platform to Dr. Desai, I would request that he has a small presentation of Dr. Desai and Dr. Puneet be played. Admin, please play the Instagram video. Vigya? उम्र में आज की टेक सेवी दुनिया में मोबाइल या पीडीएस किस हद तक इस्तेमाल करने दिया जाए, इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं। लेकिन आप सब मानेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि हमें उदाहरण से बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अपने बर्ताव से बच्चे सीखेंगे देख के।
दूसरी बात, मुनासिब इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का, फोन का या पीडीए का, कंप्यूटर्स का जरूर हो, लेकिन बाहरी दुनिया से बच्चों को एक्सपोज करना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा टेक सेवी इंटरनल फैंटेसी वर्ल्ड का बच्चों के लिए और बाहरी सच्चाई की दुनिया का। Now we have a small article by Dr. Jain. Can you explain, Dr. Jain, what exactly is this so that larger viewers can understand? Good morning, everyone, and thanks for welcoming to this platform. So, ये जो मेरे जो आर्टिकल जो है, this is all about सोशल मीडिया एंड हाउ इट इज इंक्रीजिंग। गैजेट्स जो हैं जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे को किस तरीके से हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं और किस तरीके से हमारे ऊपर परेशान कर रहे हैं और हमारी लाइफ को और बेहतर की जगह खराब बना रहे हैं, एक दूसरे से अलग रख रहे हैं हम लोगों को। और इसके लिए हम हमारे जो माँ बाप है या हम खुद हैं, हम खुद ही इसके लिए जवाबदायक है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हम बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं जिससे कि वो शांत बैठा रहे। बच्चे के साथ जब वो मोबाइल जब आ जाता है तो वो एक खिलौने की तरह खेलने लगता है और धीरे धीरे उसकी आदत सिर्फ मोबाइल के अंदर ही रह जाती है, क्योंकि उसको लगता है मोबाइल के अंदर उसको पूरी दुनिया मिल गई है। और धीरे धीरे जब वो मोबाइल की तरफ बढ़ने लगता है तो पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ ये हमारे से चुपचाप बैठा है, आराम से खेल रहा है, अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के बच्चे के अंदर वो मोबाइल की आदत या पीडीए की आदत पड़ जाती है। और जब वो खाना खाता है या कुछ भी करता है उस समय हमेशा उसको सिर्फ मोबाइल या पीडीए की जरूरत पड़ती है, जो कि उसको मोटिवेट करता है, जो कि उसको करता है कि उसके तरफ ही बढ़े और उसके बगैर उसकी दुनिया बेकार है। ये चीज मैंने इस आर्टिकल में एक्सप्लेन करी है। Thank you. Thank you. Yeah, over to you, Kishore, for the first round of questions. थैंक यू सर। डॉक्टर निमेश देसाई, मैं डॉक्टर पुनीत जैन के आर्टिकल से ही क्यों लेके एक सवाल पूछना चाहता हूं जो इन्होंने बच्चों के बारे में कहा है। आज आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर देखा होगा तो पेज 1 पे एक एड छपा है, पूरा फुल पेज। ये एड यूट्यूब की तरफ से है। इस एड में यूट्यूब ने ये कहा है कि वो एक ऐप, वीडियो ऐप जारी करने वाला है जो 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होगा और सिलेक्टिव वीडियोस होंगे। हो सकता है वो शिक्षा के लिए हो, पढ़ाई एजुकेशन से रिलेटेड हो, लेकिन है वीडियो और वो बच्चे उसको देखें और उसको डाउनलोड करें। अब डॉक्टर देसाई आप ये बताइए कि इस तरह के वीडियो क्या प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि और आप एडिक्शन की ओर बढ़े? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप किशोर जी। मुद्दे मुझे लगता है प्रारंभिक रूप से 2-3 सोचने लायक है। जो डॉक्टर पुनीत ने बात की, आपने जहां से कड़ी उठाई, सबसे पहला मुद्दा मैं ये आप सबके ध्यान पे लाना चाहूंगा, हमारे दर्शकों के खासकर, कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई आती है, और 1 मिनट के लिए गौर करें, मानव जाति ने जब पहली बार अग्नि का आविष्कार किया तब से लेके फ्रॉम इन्वेंशन ऑफ फायर टू अ मियर नाइफ टू एटॉमिक एनर्जी टू व्हाटएवर स्मॉल और बिग एग्जांपल, हमेशा दो-धारी तलवार रही। Every new technology is a double-edged sword, in general for humanity and for individuals. It can harm, it can help. Second, जैसे केमिकल एडिक्शन से हमने बात शुरू की, उसी प्रकार आप सबने जो कहा, केमिकल एडिक्शन की तरह ही बिहेवियरल एडिक्शन या नॉन केमिकल एडिक्शन पहले से पहचाने गए हैं। मसलन गैम्बलिंग, रेस कोर्स हुआ एडिक्शन। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने मुद्दा उठाया, पब्लिक हेल्थ मॉडल में
इंक्लूडिंग एडिक्शन एंड मेंटल प्रॉब्लम, तीन कोण जो है त्रिकोण के बड़े क्लियर है। होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट। भाई होस्ट तो व्यक्ति विशेष है, एजेंट है या तो इन्फेक्शियस डिजीज में बैक्टीरियम या वायरस है, इसमें वो जो टेक्नोलॉजी है वो है। एनवायरनमेंट जो है, इसमें एक फैक्टर सबसे बड़ा जुड़ जाता है बिहेवियरल एडिक्शंस में और केमिकल एडिक्शंस में। अगर आप गौर करें मार्केट का, मार्केट है लेजिटिमेट एंड नॉन लेजिटिमेट, पॉजिटिवली डायरेक्टेड और नॉन पॉजिटिवली डायरेक्टेड मार्केट विच वांट्स टू कैप्चर मोर एंड मोर अटेंशन। तो ये जो आपने उदाहरण दिया आज का फ्रंट पेज का, ये बिल्कुल वही फोर्स है। और मार्केट फोर्सेस के सामने मानव जाति की जो मनोबल है वो बड़ा द्वंद मुश्किल चलता है। आप याद करें टोबैको में हुआ है, अल्कोहल में यही हुआ है, बिहेवियरल एडिक्शंस में होता है। और एक आखिरी मुद्दा जो इस कड़ी में, सारी टेक्नोलॉजी बहुत एक्साइटिंग रहती है नई वाली जब नई नई होती है। जब बुक्स नहीं आई थी मानव जाति के इतिहास में, तो कुछ लोगों को बहुत एडिक्शन हो गया, उनको कहते थे बुक वर्म, राइट, हम जब बच्चे थे। लेकिन चक्कर ये है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब आपको ऑडियो, विजुअल, हर प्रकार के स्टिमुलस एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव वे में देती है। इट्स अ नियरली रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो जो डोपामिन हाई है, डोपामिन रिलीज है ब्रेन मैकेनिज्म में, और उससे जो साइकोलॉजिकल किक मिलती है वो उतनी ही तीव्र है। सो ऑब्वियसली the stimulus is much stronger than what we have had, and technology keeps improving every day. जैसे हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी improves by leaps and bounds to capture attention, eyeball catching. तो मुश्किल बहुत है, लेकिन जैसे जैसे आपने मेरी ब्रीफ रील में सुना, मुझे लगता है देखिए इस पूरे सैलाब से तो कोई जीत नहीं सकता, नहीं कोई जरूरी है। मुझे लगता है हमें एम्ब्रेस करना चाहिए जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कोविड दौरान की, जो फायदे हुए टेक्नोलॉजी के। आज लर्निंग में, एजुकेशन में, हमारे मेडिकल फील्ड में जितने फायदे कम्युनिकेशन के, क्या हम इस टेक्नोलॉजी को लगाम लगा के, संयम में रख के सही इस्तेमाल कर सकते हैं व्यक्ति विशेष के लिए, छोटे समूह के लिए या मानव जाति के लिए, या हम इसको बेलगाम होने देंगे। आखिर में कभी बात करेंगे, मुद्दा छोटा सा कह दूं, हमें ध्यान रखना है सिर्फ ये कि जो व्यक्ति अब्यूज या एडिक्शन के लायबल है, जैसे शराब और तंबाकू के लिए सच है, कुछ व्यक्ति लायबल है, ज्यादा ससेप्टेबल है, एडिक्शन या हैबिचुएटेड हो सकते हैं, उनको मदद करनी है, उन पे ध्यान रखना है। बाकी समाज को शायद बेनिफिट मिले इस टेक्नोलॉजी का। डॉक्टर साहब, एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग वही लोग करते हैं जिनका थोड़ा सा पहले से मानसिक संतुलन गड़बड़ होता है, या जो ज्यादा करते हैं उनका गड़बड़ हो जाता है? दोनों में क्या है, और प्रिवेंशन क्या है? ये वो मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई ना। पहले मुझे हंसी इसलिए भी आई कि आप सबको याद होगा, और पूरी गंभीरता से लेकिन लाइटर वेट में, ह्यूमर में हम ये कह सके, अक्सर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के लिए भी कहा जाता है ना, मुर्गी अंडे वाला एग्जाम्पल वहां भी सही है कि जी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वही बनते हैं जिनको या तो कुछ समस्या होती है या कुछ अपना हल ढूंढ रहे हैं। क्या साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट संतुलित होते हैं? ये समाज में बहुत फैली हुई बात है, और मैं इसको हेड ऑन फेस करना चाहता हूँ। इसी भाई, क्या ऐसे व्यक्ति ऐसे प्रोफेशंस में जाते हैं या 25-30 साल काम करने के बाद असर होता है? ये विवाद कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो बहरहाल जो बात है आपकी, खालीपन पर्सनालिटी के भाग रूप हो या टेम्पररी मानसिक स्थिति के रूप हो, उस दौरान सोशल मीडिया एक बहुत यूजफुल या हार्मफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने कहा, जो एडिक्शन के ससेप्टेबल लोग हैं उनको हमें बचाना है, उनकी मदद करनी है। सिमिलरली जो मानसिक रूप से परेशान है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो कहीं गलत डायरेक्शन में तो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे हैं, ये फर्ज हो जाएगा मित्रों का, काम पे जो साथी है उनका, और परिवार के लोगों का। So it's actually very difficult, like I tried saying in that reel, how do you strike that good balance between productive, appropriate use of technology versus harmful use?
और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो हम बाद में बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं फिर लौटूंगा आपके पास और सवाल के साथ। डॉक्टर पुनीत, जी सर। ये डिजिटल एडिक्शन स्ट्रक्चरल ब्रेन चेंजेस की वजह से होता है, हाँ जी। ये मैंने कहीं पढ़ा है, तो ये क्या है और कैसे होता है? जब हम कोई चीज को बार बार देखते हैं तो हमारे अंदर, क्योंकि अब सारी इंडस्ट्री को मोबाइल के अंदर आ गई है, जो भी चीजें हैं सब मोबाइल के अंदर अवेलेबल हैं, और खासकर जैसे कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, और अभी सिंगल पेरेंटिंग भी आने वाला है और चालू हो चुका है इसके अंदर। तो सब लोग अकेले हैं तो सब चाहते हैं अपना इसके अंदर मोबाइल के अंदर ज्यादा देखें या मोबाइल से ज्यादा इंटरेक्ट करें, बिकॉज उनको सब चीजें वहीं एक ही जगह मिल जाती है। इट्स लाइक व्हाट यू कॉल अम्ब्रेला अंडर विच यू गेट एवरीथिंग, वन अम्ब्रेला। तो इस वजह से जब लोग ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो उनके अंदर डोपामिन रिलीज होता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, which gives a temporary happiness, but it is not a permanent happiness. टेम्परेरी हैप्पीनेस की वजह से वो अपने आप को ज्यादा एडिक्ट कर लेते हैं, ज्यादा उसी उसी में अपनी खुशी देखते हैं, उसी में अपनी लाइफ देखते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रेन केमिकल चेंजेस हो रहे हैं माइंड के अंदर, उनका ब्रेन फंक्शन चेंजेस आ रहे हैं, प्लस उनके अंदर सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखी जा रही है, आईज वीक हो रही हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो रहा है उनके अंदर, प्लस उनका जो ब्लड केमिस्ट्री है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, which is very alarming. So we need to address all these things in the medical world. डॉक्टर साहब, एक्सपर्ट्स कहते हैं, आप लोग भी बताते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस की वजह से स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन हमने ऐसे काफी लोगों को देखा है कि जिन्हें नींद नहीं आती है, वो स्मार्टफोन यूज करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं और उनको नींद आती है। ये कंट्राडिक्टरी नहीं है? नींद लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल अल्कोहल की तरह। वो डोपामिन का रिलीज हो गया ना सर इसमें। डोपामिन गिव्स देम द रिलीज ऑफ सम हैप्पीनेस व्हाट दे हैव बीन लुकिंग फॉर, और जब उनको वो डोपामिन मिलता है तो वो सो जाते हैं। तो उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके पास है, बिकॉज आजकल वर्ल्ड लोनली ज्यादा हो रही है। we all used to live in a joint family earlier, but gradually we are moving into the nuclear family as well as single parenting, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो खुशी देखने के लिए इंसान मोबाइल की तरफ ज्यादा जा रहा है, जो कि उसको टेम्परेरी रिलीफ दे रही है, और उससे उसको नींद भी आ रही है, या उसको लगता है कि कोई ना कोई उसके पास है जो उसका जो उसके साथ हमेशा रहेगा और उसको कंफर्ट देता रहेगा। तो ये मेन मुद्दा है जिसकी वजह से लोगों को नींद के लिए मोबाइल का सहारा चाहिए आजकल। और दूसरी बात ये है, क्योंकि लोग किसी से कुछ बात करना नहीं चाहते, उनको लगता है कि कोई जज करेगा उनको, तो वो चाहते हैं कि हम हमारा वन वे कम्युनिकेशन रहे, वो भी मोबाइल के साथ, जहां हमारे को कोई जज नहीं कर रहा और हमारे को वो चीज मिल रही है जो हम चाह रहे हैं। जी सर। मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर एक बात और कही जाती है जी। कि इसमें रेडिएशन होता है जिसकी वजह से बीमारी होती है, कैंसर जैसे रोग होते हैं। जी। ये मिथ है या इसमें सच्चाई है? बहुत सच्चाई है। आप देखिए जहां जहां ये मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, वहां पे जो हमारी जो चिड़िया होती थी पहले, वो सारी चिड़ियाएं गायब हो गई हैं। प्लस ये भी देखा गया है ब्लड कैंसर इज ऑल्सो ऑन द राइज। जहां जहां मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, बिकॉज इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, जहां से रेडिएशन इतनी हाई आती हैं, जिससे कि मोबाइल चले या कनेक्टिविटी रहे, वो हमारे ब्लड को अंदर ही अंदर बॉईल कर रही है, अंदर ही अंदर उसकी पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर रही है, जिससे कि ग्रेजुअली पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, तो एंड मतलब ब्लड खतरा, कैंसर इज कवरिंग द होल बॉडी ऑल्सो ग्रेजुअली। तो इसके हिसाब से खतरा जो है मोबाइल फोन से ज्यादा टावर से है। जी सर।
और साथ साथ के साथ अगर मोबाइल के अंदर आपकी रेडिएशन अगर जो जो कंपनी ने लिखा है अगर उससे ज्यादा है, देन द फोन इटसेल्फ इज कैंसर कॉजिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब, हम फिर लौटेंगे आपके पास। ओवर टू यू मिस्टर शंकर, सेकेंड राउंड में लौटेंगे फिर। Thank you, Kishore. And Dr. Desai, my first question is to you. You have had a rare, ringside view of changes that has happened in human behavior and, in a lot of things that are connected with human beings. Now, because you have 40 years experience, over 4 decades is not a simple thing. So if I could ask you, what are the milestone changes that you found in human behavior, I would say from kids to elders, before the digital era and post-digital era, what would you say? I guess the single most striking phenomenon, which I'm sure both of you or all three of you indeed know, is what has been recognized by WHO recently as a significant risk factor and a health-related risk factor, both for physical and mental health, and what our ancient literature also referred to, loneliness. But like Kishorji and we were discussing, see, this will be an ongoing debate, and we will have to contextualize and assess this concept in our own situation individually or in a given group or a society. Is loneliness the cause or the major contributing factor to increasing use of social media, and or is loneliness the result, as Dr. Puneet was saying? Are we all becoming more isolated from each other than even we were, say, 20 or 30 years ago? Because now we all have a phone. There is this famous cartoon in a number of ways that we have all seen, I'm sure, at a dining table, at a family dinner, 4 or 5, right? So the family supper time actually getting so consumed merely by, this technology is whether, I really do believe, and let me give you my view there. Like I said, to repeat, to contextualize for each person in their own situation. But I think it's a bit of both. And like you hinted, see, some of us who have lived long enough, Puneet, thank goodness, is younger, but I'm sure Puneet has seen enough in his lifetime. 30 or 40 years ago, world over, and certainly in Indian society, there was much more of the collectivism and togetherness that our society is part of. Let's also accept the fact that the issue of distancing and individuation began before the mobile technology. So to blame only mobile technology would be totally wrong. Somewhere the social changes and the occupational pressures and privacy and paranoia, all of that was getting to us to become isolated and alone. भीड़ में भी अकेला है इंसान, right? Now, mobile technology comes in at a time when human race was in this situation. So I think it's about both a 50-50, 60-40, 70-30 in different situations. For example, let me say, see, elderly people living alone or even a couple, but, they have communicated enough for life, they are comfortable with each other. What used to be known in our romantic terms, Shankarji, as companionable silence, right? After some years of courtship or 30 or 40 years of marriage, you don't need to communicate. You're both sitting in your house, in your armchairs. Now, and yet there used to be that emptiness, the, loneliness. Social media fills that, right? Let me recall something else. Around 2000, when the net had come in, about 10 years for that time, and before all this technology came up, there was this wonderful research that started that has continued more and more. That has the internet actually helped or not helped family relationships? And what it concluded, I thought was very nice, all those studies. And say, while it might have taken people away from each other, as we all lament, living within a household, but please imagine, as compared to 60s and 70s, or even up to the 80s, by the 90s and 2000 and after that,
cousins and uncles and extended family across the country or across the globe were connected. So you are perhaps compromising the direct physical contact and communication, which you should try and not let it happen. But you're connecting globally so much better. Let me use a catchphrase that may be a little provocative, but I would like to say that with caution and see if we can pick it up, all of us, for our views. And I don't know if there is possibility for viewers' comments. What if I were to be the devil's advocate for a minute and say that let's stop lamenting, let's be careful about harmful effects, but let's stop lamenting and blaming the social media for 21st century across generations, not only for kids, for elders, for working people, for single men and women. Social media is the new social support. That's true. That's your statement. Yes. Dr. Puneet, what is your view on this? My view on this is, sir, whatever sir has said is absolutely correct. And it is becoming a real pandemic gradually, because nowadays people don't want to interact within themselves what they used to earlier. Because पहले क्या होता था, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम था, जो कि अब डाइल्यूट हो गया है. लोग अब सोचते हैं कि वो हमारे जो भी हम बात करेंगे हमारे को जज करेगा या कुछ ना कुछ कहेगा. तो इसकी वजह से लोग अब खुद अपने अपने डिसीजंस ले रहे हैं, अपने अपने सोशल मीडिया पे ज्यादा जा रहे हैं, जहाँ पे उनका वन वे कम्युनिकेशन है. सेकेंडली, जैसे सर ने अभी बताया कि लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा हो रहे हैं, एंड धीरे धीरे एवरीबडी इज गेटिंग इनटू वर्क एंड वर्क सिनेरियो. पहले क्या होता था, husband used to work, wife used to be taking care of the home. But nowadays, both husband and wife are working, and they are both carrying their own thought process. And the work is also becoming more increasing and more time consuming. जिसकी वजह से उनके पास कम्युनिकेशन का टाइम नहीं रहा है जितना पहले होता था, जिसकी वजह से अब वो सोशल मीडिया पे ज्यादा जा रहे हैं, just to increase that dopamine factor, so as to get a little pleasure in their life, which is very temporary. Nicely put. Nicely put. Dr. Desai, I will come back to you on another issue. Is that you have said that when any technology is invented, there is a fear factor that comes in. When if you look back at history, when the first wheel was invented, there was a lot of fight over it and predictions that this is going to be the end of the world. When the steam engine was invented, they said, wow, this is going to affect a lot of people. And then, there is a lot of fight, especially in England. Now, do you think that this particular issue of mobile addiction and mobile growth is just on the increasing phase and we will plateau it out and then again probably see a decline sometime in the future, and so that we need not fear, but instead of opposing it, probably learn how to live with it? You're quite reflecting what I started with. Remember, any new invention, technology is a double-edged sword. And you give wonderful examples of that. The difference I'd like to draw is this, and I hope all of you and our viewers, not just for my satisfaction, get the, I think, sensibility for its inherent merit, and yet differentiating across different dangers. See, steam engine to aircraft to, all those technologies, like you said, after the initial fear, it all plateaued. I was thinking, see, air travel today is safer than perhaps life itself. The statistics would suggest that for all the fear of air travel and when we get troubled, the safety margin is much better than daily life. Okay, so it's been so standardized. The point that is different about this new technology is this two or three things. One, it's about personal behavior like alcohol, tobacco, gaming, race course stuff. Two, it's a very individualized private behavior that's impossible to monitor and control by family or society. Three, and most important, like we said at the start with Kishorji, and we have to bring this in, constantly, the market forces.
Very often the market forces want to do it for education. But let's also accept there are market forces that want to do it only for mercenary profit-making reasons. One, they don't care what happens to the youngsters' tendencies for violence, like we know about those, Blue Whale and other games. So and the kind of kick that this technology provides, and this I can tell you, sir, not only of the 40 years of the psychiatric experience, but 60, 65 more years of life, as some of you know at different stages. The kind of kick that this medium provides and the variation that this provides, human race has not experienced. Films was one such thing that happened nearly 100 years ago, right? And yet that was limited and one didn't have control. Here, it provides you an excellent kick and a range of kick and excitement. Two, it's in your personal control. Third, because of the market forces, it's so low cost that it's almost negligible. Because the market base spreads, it becomes that much less in cost. So today, I mean, if you notice, not to be unfair in terms of class bias, but any of the labor not even earning possibly 10,000 rupees a month, but in his or her free time, security guard is playing with the social media on the phone. So it's actually available for a dime, which is wonderful in one level. It's also a danger, I keep repeating, for those who are vulnerable. Yeah. So somewhere in the society, micro or macro level, we'll have to start identifying people who are more vulnerable to develop addiction. Yeah, wonderfully put. Dr. Jain, I just wanted to ask you, in nutrition, we have this concept of fasting, we have intermittent fasting, all this to detoxify our body. Mm-hmm. So do you suggest a sort of digital detoxification or digital fasting so that people can begin? And how easy is it to do it? Because it's a concept that is very good, but then is it implementable, especially in your practice? That do you see patients of such who are so addicted that you suggest digital detoxification? It is very much advisable to have a detox. So, like for example, when you are having dinner time, or when you are having food time, or when you are about to sleep, one should avoid using mobile phones, because mobile phone excites the brain, and when it excites the brain, you are away from the reality. Secondly, sir, I would say use mobile the least when it is possible. Means only for when it is necessary. Do not use it as a toy. Most of us are using it as a toy or for the purpose of entertainment, because we are not been able to go to a movie or something, and whenever we get time, we switch on to our these electronic gadgets, so entertain ourselves or get the dopamine factor. So I would strongly suggest for the kids and for the seniors to use phones only to the minimum use, or when it is absolutely necessary. Yeah, what are the types of patients that you see coming to you with the digital addiction? Do you come across such patients in your practice? Yes, sir. The number of patients have increased for the digital addiction problems, and I always tell them, use it to the minimum. In fact, you will be surprised, the owners of the mobile phones, the factories, the owners, the manufacturers of the mobile phones have not allowed the phones in their own houses because of this main factor. Because this factor also breaks down the family interaction, as well as being in the interacting with others. So it creates a distance between them. So mobile should be parked outside or in the gallery when we are coming to the house. Like most of the European countries have already done this kind of a thought process, where mobiles are being parked in the gallery of the house, and the people are being able to socialize and talk to each other. That's a great idea. Yeah. Now I'll hand it over to Kishore for a second round of questions.
slightly wild idea there. Yeah. It seems to me, it suddenly occurred to me as Dr. Kunjan was saying what he was saying, and this may not be original. I'm sure somebody somewhere is already working on it or has finished working on it, and the product must be in the pipeline. But just to share it here, just like if you all recall, it happened with the automobile technology. You see, like many other technologies, automobile technology kept growing and keeps growing for everything, finesse, speed. And at some points of time, the car manufacturers realized that the mortality and the morbidity with road traffic accident was so significant public health problem that you started putting a speed limit, and you could have your vehicles, right? So should it not be possible, and I'm sure it will happen soon if it's not already happened, AI, with the help of AI, Puneet's or my mobile use, depending on the duration and the content purpose for which I'm using, the AI should contain it. And say switch it over. We have used it already for non-productive, non-professional purposes for more than 3 or 4 hours in a 24-hour cycle. A warning goes up, the battery goes out. I'm sure it will happen, someday. It's a sort of, a digital airbag like you find in the cars. Exactly. Yeah. And these kind of apps. Speed breaker. See, you can't take your vehicle beyond 80 kilometers per hour. Yes. Yeah? It's like having a governor. These kind of apps have already started coming in, sir. Oh, good. Sure. These already are there in the pipeline, and many more on the pipeline, sir. Yeah, right. Sure. So, if I might say, a cliche again, the problem might itself find its own solution. AI will find its own solution for overuse. That's there across technology. You have airbags in cars, Yes, you have planes, you have, the things, when the pressure is down, you have things coming down to help you. I think that might come in across. Yeah, Kishore? Right. Unmute yourself, Kishore. Thank you, sir. Mr. Shankar has given a wonderful idea of digital fasting. We must promote it. Absolutely. Dr. Desai, आपने जो एक वर्ड यूज किया मार्केट फोर्स, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है. आपको लगता है कि जिस तरह से मार्केट प्रमोट कर रहा है, हर रोज नए नए आईफोन हो या कोई दूसरे फोन हो या टैबलेट्स हो, नए नए ब्रांड के आ रहे हैं, नए नए फीचर के साथ आ रहे हैं, और जिस तरह से आज मैंने एक YouTube का एड दिखाया आपको, क्या आपको लगता है कि सरकार को इसको रेगुलेट करना चाहिए? मैं ये कहूंगा किशोर जी कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये शायद सवाल मुनासिब ना हो. क्या ऐसा किया जा सकता है? जिस लोकतांत्रिक ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ ऑलमोस्ट बड़ी सी दुनिया चल रही है, कुछ देशों को छोड़ दीजिए, क्या ऐसा संभव है? बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल चल रहा है हमारा, और जो हमारी ये नीड, परसीव्ड नीड है. तो फेल्ट नीड आपकी तरफ से मैं बिल्कुल एक लेवल पे एग्री कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसकी फिजिबिलिटी नहीं लग रही. तो हमें वही है कि जैसे ठेठ भाषा में कहें, आर्थिक रूप से, पैसे के हिसाब से या अपनी सेहत के कारण हमें पैर उतने ही फैलाना चाहिए जितनी मेरी चद्दर हो. अगर ये हम ज्यादा जनता को और यंगस्टर्स को सिखाएं, है ना, सादगी, सिंपल लाइफ, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ की बात करना थोड़ा गैर मुनासिब हो गया आज के वक्त में, बिकॉज द ओल्ड वर्ल्ड एंड यंगर जनरेशन इज टुवर्ड्स बाइंग न्यू थिंग एवरी मंथ. बट हमें कोशिश शायद वो करना चाहिए. Market will work. Perhaps government can try and regulate, but I really don't think regulation कुछ हो सकती है. हमें उसकी डिमांड मुनासिब करना होगी कि जहां जरूरी है वहां नई टेक्नोलॉजी और नए मॉडल्स आते रहें. लेकिन मार्केट सोचने से एक और बात है, आपने तो बात की हार्डवेयर की, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड दी पैकेजेस. यू सी, एक बार अगर मैंने बहुत बड़ा एम्पायर एक बना लिया है गेम्स बनाने का, तो मुझे उसको सेल्फ सस्टेन भी तो करना है. So if I am the owner or the managing director of a company that produces games,
I will go on and I have to keep increasing my market. Competitiveness जो है, yes, what would be very nice, like we said last few minutes about, problem finding its own solution. और ये भी कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन जाहिर है सीमित रहेगा. It will always be a partly difficult battle. क्या गेम्स बनाने वालों को हम, जैसे हम सिनेमा वालों से बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, क्या हम ये टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, सिनेमा वालों को इसी प्रकार की गेम्स बनाने वाले गेम्स बनाए हर प्रकार की, not only educative and excitement giving like do way, but also some that give you responsibility of behavior. क्या गेम्स में ये भी तो हो सकता है ना कि भाई, जैसे एक बात तो पक्की है, आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हो, हम सब ने महसूस किया, अगर महामारी ने एक चीज हमें सिखाई है मानव जाति को, 2 4 5 में से, एक ये है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथों में है. Your health is in your own hands, in your behavior. So somewhere if we can sensitize and encourage manufacturers to diversify their nature of products as per different perspectives. रेगुलेशन का सवाल हमने इसलिए उठाया था डॉक्टर साहब, क्योंकि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि एक स्पीड ब्रेकर टाइप की चीज होना चाहिए. मुझे पता नहीं कि टेक्निकली वो संभव है या नहीं, लेकिन एक इनबिल्ट स्पीड ब्रेकर हुआ करता था, जैसे बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी. लेकिन अब उसका भी उन्होंने पावर बैंक निकाल दिया कि अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए तो दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि बच्चे ही क्यों, बड़े लोग भी अब इसके एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं. कार्ड खेलना, चेस खेलना, वीडियो देखना, ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है. उसकी क्या वजह है? अगेन वही है बॉस, जो फिर मुद्दे पे आए, जो हमने बात की लोनलीनेस की, खालीपन जो है. डॉक्टर पुनीत ने भी पहले कहा था कि न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द फैमिली, शहरीकरण, आधुनिकीकरण के साथ अकेलापन बढ़ता जा रहा है. अच्छा, अकेलापन न महसूस हो या अकेलापन कम महसूस हो, इस कारण हम सोशल मीडिया की तरफ चले आते हैं. जो मैंने कही बात उसको थोड़ा और विस्तृत करूं, सोशल मीडिया एज सोशल सपोर्ट, कम से कम पोटेंशियल यूज ऑफ सोशल मीडिया एज सोशल सपोर्ट हमें सच में गौर करने लायक है. मैं हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ थेरेपी सेशन में एक्चुअली बात करता हूँ, जब पेरेंट्स बहुत वरीड होते हैं यंग लोगों के फोन यूज के बारे में. मेरा ये विचार बना है उन सेशंस के और तजुर्बे के बाद कि हम शायद ये भी थोड़ा सा ओपन माइंड रखें कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता के कारण ज्यादा इंट्रोवर्ट है, मोबाइल फोन में ज्यादा रहता है, कैन वी एनकरेज हिम और हर टू डू इवन वर्चुअल एक्टिविटीज इन ग्रुप. मेरे लिए 15, 17, 18, 21, 22 साल का वो जो क्लाइंट है वो अगर सोशल मीडिया पे ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो एक लेवल की बात है. अकेले सिर्फ गेम्स खेल रहा है तो वो अलग बात है. सो इफ यू एक्चुअली ड्रॉ 2x2 स्क्वायर, देयर इज एक्चुअली रियल लाइफ इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड ग्रुप एक्टिविटी, वर्चुअल लाइफ इंडिविजुअल एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी. बेस्ट वुड बी रियल लाइफ ग्रुप एक्टिविटी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. हो सके तो चलो इंडिविजुअल रियल लाइफ एक्टिविटी, बट अगर वो भी ना हो रहा हो तो कम से कम एनकरेज द यंगस्टर्स टू सोशलाइज विद अदर पीपल, एटलीस्ट टू वर्चुअल मोड. मैं जो बार बार कहना चाह रहा हूं, आप सब गौर करेंगे और मुझे उम्मीद है इत्तेफाक करेंगे. महामारी में हमने एक और चीज देखी. एक बार सोचिए, शायद हमने बहुत पहले बात की थी 2-3 साल पहले, किशोर जी और शंकर जी, अगर महामारी मोबाइल टेक्नोलॉजी से पहले आई होती तो मानव जाति की क्या हालत हो. कोई कम्युनिकेशन या सोशल सपोर्ट मिल पाता हमें से किसी, यू सी. तो टेक्नोलॉजी को हम सही मायने में इवन रिश्तों के लिए, रिश्तों की गर्माहट के लिए, रिश्तों को बढ़ाने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीखें और लोगों को सिखा सकें, मतलब सारी समस्या का जड़ जो है वो मिसयूज है. डॉक्टर पुनीत, एक मीडिया हाउस ने स्टडी कराई है, उसके हिसाब से कि इंडिया में जो डिजिटल एडिक्शन है
नॉट ओनली मोबाइल फोन, बाकी चीजों का भी, उसमें 50% जो शिकार हैं वो 13 से 18 एज ग्रुप के हैं जी। और 36% 18 से 24, मतलब आप समझ लीजिए कि 86% 24 साल से कम के लोग हैं। और ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। जी। क्या युवाओं को एडिक्शन मुक्त करना ज्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत उसके? और दूसरा ये भी है कि ये पीयर प्रेशर में भी रहते हैं कि अरे उनके पास आईफोन है, मेरे पास एंड्रॉयड है, वो आईफोन वाला ज्यादा बड़ा है, ज्यादा महान है, वो फोन खरीदते हैं, फिर वो देखते रहते हैं वो और तरह तरह के वीडियोस देखते हैं। तो क्या ये कम उम्र के लोगों को एडिक्शन मुक्त कराना आसान है या जो ज्यादा उम्र वाले हैं उनको आसान है? कम उम्र वालों को ज्यादा आसान है, क्योंकि वो ज्यादातर रोल मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। खासकर अगर पेरेंट्स अगर ये रोल मॉडल करें और अपने घर के अंदर एक डिसिप्लिन बना कर रखें, तो ये काफी हद तक कम हो सकता है। और प्लस उनको साइको एजुकेशन प्लस स्कूल जो एजुकेट करता है उसके अंदर भी अगर हम इस टाइप के कैंप्स लगाएं, जहां हम बच्चों को बताएं कि भाई इससे ये प्रॉब्लम आ रही है आपको और अब प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आइज का नंबर्स बढ़ना, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम आना, या अकेलापन ज्यादा होना, क्योंकि आप सबके सब मोबाइल पे डिपेंड है। तो इस टाइप के अगर हम रोल प्लेज या इस टाइप के अगर हम कुछ एक्टिविटीज अगर स्कूलों में जाकर करें, तो काफी हद तक ये कंट्रोल में आ सकता है। और साथ के साथ अगर हम बच्चों को बोले कि भाई आपको अपने घर के अंदर इस टाइप की एक्टिविटीज करनी है, और बताना अपने पेरेंट्स को कि आपको भी मोबाइल कम यूज करना चाहिए, या उस सिर्फ उसी के लिए यूज करें जिसके लिए वो बना है, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है बड़ों के अंदर ये भी कम हो जाएगी। एक चीज और देखी गई है डॉक्टर साहब, जी। फोमो फैक्टर, हम्म। फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस। ये युवाओं में ज्यादा देखा गया है कि उन्हें ये हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा छूट है, ना जाए, कहीं कोई कुछ, छूट हाँ, ना। कहीं कुछ ट्रेंड हो रहा हो फेसबुक पे, ट्विटर पे कुछ ट्रेंड हो रहा हो, इंस्टाग्राम पे कहीं हमसे छूट तो नहीं गया, हमारे साथी हमसे आगे, पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, हमारे साथी हमसे आगे तो नहीं गए, इसलिए भी वो चिपके रहते हैं। जी। तो इस फोमो फैक्टर का क्या इलाज है? इस फोमो फैक्टर का ये इलाज है सर, कि जब बच्चों को हम बताएंगे कि बहुत सारी चीज, जैसे उनको हम एग्जांपल दे सकते हैं कि आपकी बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं स्कूल में। क्या आप पूरी बुक को रट सकते हैं, या पूरी बुक का रख सकते हैं अपने माइंड के अंदर, विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। बट हम सब पूरी बुक को पढ़ते जरूर हैं, बट हम पूरी बुक को अपने दिमाग में नहीं रख सकते, या पूरे सिलेबस को अपने दिमाग में नहीं रख सकते जिसके ऊपर हमारा एग्जाम होता है और हमारी टेस्टिंग होती है। इसी तरीके से वी शुड लेट लेट अस एब्जॉर्ब ओनली दोज थिंग्स विच इज एक्चुअली गुड फॉर अस। दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हर समय नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर समय नए फोन्स आ रहे हैं। आप सपोज मैंने आज फोन लिया, ये सोच करके दिस इज लेटेस्ट, और अगले दिन मैं गया शॉप पे, तो मैंने एक और फोन देखा विच इज बेटर देन दी फोन दैट आई हैव परचेज्ड। तो मैं हर रोज थोड़ी जाकर के नए नए फोन लेता रहूंगा। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हर हर हफ्ते या हर 15 दिन में नया फोन लेते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी बिग एडिक्शन। तो ये सब हमारे को जागरूकता करनी पड़ेगी स्कूल लेवल पे, या मेनली स्कूल लेवल पे ऊपर, और एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें हमारे को जरूर लानी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर जागरूकता है कि वो कर क्या रहे हैं, क्या वो सही रास्ते पे या गलत रास्ते पे, वो तो उनको चुनना पड़ेगा खुद ही। बट वी एज द मेंटर्स वी हैव टू टेल द स्टूडेंट्स कि लाइक व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट। ऐसी बात नहीं है। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल डॉक्टर देसाई से। ये एडिक्शन जो है वो शराब और अल्कोहल से थोड़ा अलग है, क्योंकि इस एडिक्शन के लिए हम ये इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि बड़े बड़े ग्रुप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी प्रमोट करते हैं कि अब आप ऑनलाइन क्लास करिए, ऑनलाइन पढ़िए, सब कुछ
डिजिटली कराते हैं। अब नोटबुक नहीं, उसी डिजिटल नोटबुक हो गए हैं, अब कागज पेन लेके कोई नहीं चलता है, डायरी का कंसेप्ट खत्म हो रहा है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि ये इस डी एडिक्शन जो है वो ज्यादा मुश्किल हो गया है बनिस्बत अल्कोहल और उसके टोबैको के? उस हद तक बात बिल्कुल सच है किशोर जी, कि किसी भी केमिकल एडिक्शन का डिटॉक्स और ट्रीटमेंट जितना मुश्किल था और है, उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है आज के वक्त में डिजिटल एडिक्शन का डिटॉक्स या ट्रीटमेंट। लेकिन मैं जो बार बार आपके ध्यान पे और आपके जरिए, आपके माध्यम से सबके ध्यान पे लाना चाह रहा हूं, ये कुछ लोग हैं, हम गलती ये ना करें स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस पड़ोस में या फैमिली में, कि हम सबको वही सलाह दें कि कम कर। जो बच्चे, जो किशोर, जो एडल्ट्स अगर उसका मुनासिब यूज कर रहे हैं तो उनको समझ के एनकरेज करें। हाँ, हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनको आदत हो रही है, हैबिचुएशन या एडिक्शन तक पहुंच गई है। और मैं आपसे वहां फिर आऊं, सहमत हूं बिल्कुल कि इनका बहुत बहुत मुश्किल होगा ट्रीटमेंट करना, बिकॉज दिस इज लाइक लाइफ। डे टू डे लाइफ में आज के वक्त में मोबाइल टेक्नोलॉजी या वर्चुअल वर्ल्ड से अलग हो पाना, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म डिटॉक्स तो असंभव है। आप बीच में हॉलीडेज कर लेंगे, अच्छा जी संडे को मैं मोबाइल कम यूज करूंगा या नहीं करूंगा, या महीने में एक बार मैं 2-4 दिन का खाली रख दूंगा। लेकिन जिनको एडिक्शन है उनके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मेडिसिन एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों मिला के इनका एडिक्शन का ट्रीटमेंट संभव है। फायदा हमें यह है कि जैसे डॉक्टर पुनीत ने शुरू में बताया था और हम दोनों ने बताया, ब्रेन मैकेनिज्म सिमिलर से हैं, इसकी किक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए उतना ही मुश्किल है। और उन कारणों से लेकर जो आप अभी बता रहे हैं, तो हमें ट्रीटमेंट और इफेक्टिव करना होगा। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट द वर्चुअल वर्ल्ड आज के वक्त में। और फिर भी जो एडिक्ट होती है उसको हमने ये कहना है कि देखो यार, इससे दूर रहो। अब दूर तो रह नहीं सकते, इट विल हैव टू बी ओनली लेस सो। बट आई थिंक टेक्नोलॉजीज उसकी भी डेवलप हो रही है, दवाइयां भी और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, मेथड्स, बिहेवियरल मेथड्स, जो इसको करेगी सफल। देयर आर मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में इसके लिए स्पेसिफिक क्लिनिक्स बनते जा रहे हैं, टीम्स विच आर डेडिकेटेड फॉर दिस, कि भाई ये जो एडिक्शन है, टेक एडिक्शन, उसका इलाज हम वैज्ञानिक रूप से और समझे और बेहतर करें। आई ऑल्सो थिंक, जैसा मैं पहले कहा, AI विल बी यूजफुल देयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं हम डॉक्टरी हेल्थ फील्ड की मदद करेगा वहां पर। थैंक यू सर, ओवर टू यू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore. Dr. Desai, I will use a word that you had used some time back, vulnerable. Now, what has happened is we have, of course, digital age, we are progressing, but then we have entered into a very uncharted territory of artificial intelligence, which you are just referring, and more dangerous, AGI. But my question is on, these vulnerable groups getting on to deep fake, which is manipulated image or recording that makes it appear as if someone said or something they did not. Deepfakes are often used to spread false information, harass, intimidate, or undermine people. What will be the impact of deepfakes on the vulnerable groups, especially kids and youngsters who are in their very formative stage of thinking? Yes, if I got your question right, Shankarji, that's fascinating. Again, I think it seems to me a little nuanced, at least in two major streams. One is young people, or any one of us, in fact, who may be vulnerable to exploitation or being bullied or even being subject of cyber crimes, cyber frauds, crime, all of that. Now, how do you build resistance against that? Better education, better use, better cautions, although a tough one. But my take, I'm differentiating this from the other group, vulnerable, because what I mean when I say vulnerable is those vulnerable to addictions.
So those who are not getting intimidated, who are not getting bullied on the phone or on the social media in their initial years of use, and who are actually enjoying it more, are more vulnerable to addiction. I'm on a roll, okay? No negative impact. I'm having the fun of my life. Then I'm more liable to addiction. Okay, so one will have to differentiate the vulnerability to related crimes, vulnerability to addiction, and there is still some link, if you all realize. But let me try and list out very briefly, quickly, what parents, especially of young persons, if the child is already introvert, has some other difficulties in adjustment and trait besides introversion, then better be careful. If the child neglects schoolwork or important social responsibilities in trying to meet his or her need, be more careful. Like I said, those who enjoy more are actually more vulnerable. Let me give an example. You see, and I hope all of you will bear with me on this. You see, we have all been young and we continue to even now go to parties or get-togethers. Somebody who says, I can hold more alcohol, मैं आधी बोतल पी सकता हूँ, एक बोतल पी सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, and then I can drive home. It is not a sign of macho or manliness. That's a sign that the person has developed tolerance. Yeah. Okay, so better be careful about somebody who enjoys it that much more. I'll also come briefly too, because we're running out of time. Briefly, I'll ask you one more question, Dr. Desai, is that, see, what has happened is, Shashi Tharoor famously said that Indians are very argumentative. And before the digital era, do you think that Indians were not that argumentative, and the addiction has caused argumentativeness and fighting within the society and, caused a lot of harm? Did I miss a question to me? Sorry. Shashi Tharoor had initially said that Indians are argumentative. So you drew the parallel between what was before the digital era and loneliness and other things, and what is after the digital era. So do you think that? But let me also say, right? I got it. Yeah. Let me say this from my own experience, if I might share. With or without mobile technology, I think, as I have learned, and I only realized it after my learning, that our age-old Bhagavad Gita actually talks about the same thing. Turning loneliness to solitude. अकेलेपन को एकांत में परिवर्तित करना है. Now, my point repeatedly, and I hope our viewers won't get this message wrong, to recap as we are ending. For sure, be vulnerable about those young people who are getting habituated, addicted, curtail overall use. We should be sensible. We should reduce all of it. But please, let's not forget that social media can also be very good avenue for that exercise of converting loneliness to solitude. Before the social media, a lonely person, man or woman, in his 60s or 70s, being alone in his or her apartment, in her bed, with nothing to do with possibly a radio, you see, would have had much more of psychological distress as compared to now, if he or she can connect with the grandchildren or children and nephews and nieces across the globe, including the video chats possible, right? So the whole exercise, I think the major purpose of life, most often, is to be comfortable with yourself and be very healthy. If we can use social media to encourage that, very good. Those who cannot, better be careful. Well, very, very well put, Dr. Desai. Thank you. And now I'll come to the concluding question to Dr. Punita. We are all, as discussing about the ill effects of digital media and other things. But one thing that I found interesting is there in the West and other societies which are highly literate, what they have done now is they have asked people to come to the office. They have stopped working from home. They said you should come to the office.
And when they come to the office, what they have done is they have created new areas for eateries, very attractive brands that are available for eating, very large playgrounds there for people to play new games, physical ones. They've also encouraged children to come along with children to come along with the people who are working, and even pets like dogs and cats to be brought to the office, which is sort of already a digital distraction. What do you think can happen in India, which we can ask people, we can implement so that people are digitally distracted? For which we can have outdoor games or activities which will actually distract people, and we should also reward those people who are participating in these kind of games. Will actually help people, like, come out of the distraction caused by the mobile or these electronic gadgets. And they should participate more in co-curricular activities. Here in India, we can do it now because the world is now changing, and now we are shifting gradually from online to offline. So I would suggest, like, these kind of games and these kind of reward points are going to be a very big game changer in time to come. But the underlying factor is that the lead should be taken by the companies. Absolutely. That should that's happening in the West. Probably in India also it might happen. In fact, it should be taken by the HR and by the management itself. Yeah. Not only for the employees, but for the whole management also, they should participate. They should come forward in as one family. Yeah. Be able to play through. Yeah. I'll ask one more question to you. Is like Dr. Desai had said that every technology has its own advantage, but only thing is use in moderation. Absolutely. Do you think the mobile technology and others have that's increased among kids? It has increased eye to function coordination better. That is, they are able to do multitasking far better than what I could do probably in my age. Secondly, has this technology to some extent solved loneliness among old people? Sorry, I didn't get your question. Can you please repeat it? Some studies have shown that the use of such technologies, mobile phones and games, especially among kids, has increased the coordination between eyesight and what you're doing, and also multitasking, number one. Number two is this technology has to some extent solved the issue of old age problems of loneliness. What's your take? I would suggest multitasking has increased, but only in the games, but not in the real world. They are being distracted from the studies. They want to only to play games. They don't want to do the responsibilities of the house. They shirk from each and every aspect. They don't want to, in fact, meet the people who are coming into their houses or relatives. They are just busy with their own phones or own gadgets, which is again a very big point of concern. And gradually, these kids are developing cervical as well as high eyesight, which is also alarming. And lot of students have lost their eyes also in this same process. This was okay for the time being when the pandemic was there, but since pandemic is over, we need to come back to real life rather than living in virtual life. So I would suggest these kind of things should be avoided and people should come back into real life. What do you say, Dr. Desai, on this point, sir? I agree with you. I also have this thought and smile on my face if you realize that, yes, till now, at least in human existence, the boundary between artificial and real world is fairly clear. Yeah. God forbid there'll be a time when this boundary may not be so clear. Till the time that we have it clear, let's all move more and more towards the real world and use the artificial world only where necessary. When necessary. Otherwise, we'll actually let it happen कि artificial और real blur हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा. ये भी blur हो जाएगा, plus sir, artificial world will actually take over human beings. Yes, sir, बिल्कुल. And we will become slaves to artificial intelligence. Then helpless. Yes, yeah, absolutely. Yeah, thank you. And one thing I wanted to say is, just before we conclude, I want a concluding statement from both Dr. Desai and Dr. Jain.
about how to stay away from, what is the solution for digital addiction. Dr. Desai, just a statement so that we can conclude after that. Dr. Desai and then Dr. Puneet. Let it be, like Puneet was saying, let it be your instrument. Don't get enslaved by it. Yeah. And Dr. Puneet? Sir, just enjoy life with real people rather than with virtual people. And maintain it. Yeah, very well put. I think we should use the technology that is online to connect offline. I think that is the way that we have probably do it. Thank you very much for this wonderful session. I think on detoxification, we can go on, and we'll get addicted to such topics. So we'll have to end it somewhere here. So thank you very much for your insight. This is the end of the third episode, and we'll have more such episode coming on the way. Thank you very much, and see you next time. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. Dr. Desai, I need your contact number so where I can be in touch with you. ये बता रही आपको विज्ञा दे देगी ना? विज्ञा से ले लूंगा मैं. Yeah, sure. ठीक है. Okay. Bye.